बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लास्ट क्लास में वी डिस्कस अबाउट दी दो टॉपिक्स आज हम देखेंगे। नंबर वन, सो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि प्रोसेस की आइडेंटिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं यूजिंग डेटा। द प्रोसेस मॉडल यूजिंग प्रोसेस डेटा। ओके, और दिस इज अदर देन जो हम फिजिकल मॉडल्स बाय मैथमेटिकल इक्वेशंस डिटरमिन करते हैं। दिस विल बी बाय डाटा। सो इस केस के अंदर बेसिकली लेट मी कंप्लीट दिस थिंग। इसमें जो पूरा सिस्टम है, दिस मैनिपुलेटेड वेरिएबल विल बी बेसिकली कमिंग फ्रॉम कंट्रोलर, और ये कंट्रोलर जो है, दिस इज द कंट्रोलर, और इस कंट्रोलर को हमने सेट पॉइंट दिया हुआ है, and this output is basically connected with the feedback जिसमें सेंसर और ट्रांसमीटर मौजूद होंगे, and it is fed back to the controller. तो ये बेसिकली ये हमारा सिस्टम होता है। बट हम जो आइडेंटिफाई करते हैं वो इस तरह से करते हैं कि मैनिपुलेटेड वेरिएबल पे वी विल अप्लाई सम काइंड ऑफ अ सिग्नल। ठीक है, सो वी अप्लाई हियर ऑन दिस स्पॉट, वी इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे, and so this will be in manual mode, overall system। इसको तकरीबन डिस्टर्बेंसेस को हम जीरो करेंगे, या ऑपरेशन आप उस जगह पे लेके जाएंगे जहां आपके पास डिस्टर्बेंसेस मिनिमाइज्ड हो ड्यूरिंग द प्लांट टेस्ट। सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज द प्लांट टेस्ट। और यहाँ पे हम एक इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे। इनपुट सिग्नल, द सिंपलेस्ट सिग्नल इज द फर्स्ट इज द स्टेप सिग्नल। तो हम स्टेप अप्लाई करेंगे एंड देन वी रिकॉर्ड दिस आउटपुट। जो y ऑफ t हमारे पास आएगा, हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे, ये जो भी सिग्नल है। एंड देन वी कलेक्ट दीज टू डेटा सेट्स, और हम अपने एल्गोरिथम को देंगे, या एक मेथड है जिसको हम बाय हैंड भी यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस मेथड विल प्रोवाइड अस a simplified working model for the controller design। ठीक है, दिस कैन बी, और चूंकि हम इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो द आउटपुट इज दिस y, input is your u, so this will be y upon u, and this will be equals to some kind gain divided by 1 minus theta s, or e to the power minus 1 plus tau s e to the power theta s, जहाँ पर k जो है दिस विल बी दी u हो सकता है ये किसी एक वैल्यू u1 के ऊपर चल रहा हो, जब आप स्टेप देंगे तो दिस विल गेट अ न्यू वैल्यू u2, तो u1, तो देयर विल बी सम काइंड ऑफ अ स्टेप विच इज डेल्टा u, u2 माइनस u1। अच्छा, यहाँ पे आप इन नेगेटिव, मतलब आप इसको स्टेप जो है वो हाई टू लो भी दे सकते हैं। ठीक है, बोथ आर पॉसिबल। एंड सिमिलरली जो द आउटपुट है, आउटपुट हो सकता है कि किसी y1 आउटपुट पे हो, और जब आप स्टेप अप्लाई करेंगे तो फाइनली इट विल इन स्टडी स्टेट इट विल रीच टू y2। सो यहाँ से भी हमारे पास एक डेल्टा y मिल जाएगा जो कि होगा y2 माइनस y1। सो द गेन k जो है बेसिकली दिस इज डेल्टा y, आउटपुट का कितना चेंज है डिवाइडेड बाय डेल्टा u। tau is the time constant
जहाँ पे आपके पास इसको आप कहते हैं टाइम टू रीच around 63.2% of steady state value of this. तो हो सकता है कि ये तकरीबन ये पॉइंट हो जिस पे आपके पास 63.2% ऑफ जो है Y2 इसने अचीव किया हो. सो करिस्पॉन्डिंग टू दैट अगर आप एक यहाँ पे टाइम देखेंगे तो दिस टाइम विल बी इट स्टॉप. और theta is the dead time in the response. ठीक है. So this will be the कि आपने अप्लाई कर दिया था स्टेप लेकिन देयर वाज सम टाइम जिसमें आउटपुट जो है वो 0 थी. और ऑफ कोर्स कि फिर ये शुरू का जो पोर्शन होगा इफ देयर इज अ डेड टाइम तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज थीटा और इसके बाद जितना टाइम होगा दैट विल बी कंसीडर्ड फॉर टॉप. राइट. सो हमने ये डिस्कस किया था एंड आवर सिस्टम मॉडल वाज दिस. सो प्रोसेस मॉडल हमारे पास ये हो जाएगा. दिस वाज द फर्स्ट थिंग दैट वी डिस्कस. और दूसरी चीज़ पे ये है कि नाउ द सेकंड थिंग विल कम द कंट्रोलर डिज़ाइन. उसके बाद फिर हम सेकेंडली कंट्रोलर डिज़ाइन करेंगे. ओके. सो इसको अब मैं आपको एक सिमुलेटर के ज़रिए भी करके दिखाता हूँ. And that will be your assignment as well. Keep it. This is an example of a heat exchanger model. और इस मॉडल के अंदर we can see कि हमारे पास जो ओवरऑल सिस्टम है इसको हम पहले इट्स बेटर कि हम इसको पहले एक राइट. सो इस मॉडल में अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास कंट्रोलर आउटपुट इज दिस एंड दिस इज इन द मैनुअल मोड. ये डिस्टर्बेंस है हमारे पास. दिस इज द डिस्टर्बेंस इज द कंट्रोलर. और अगर मैं इसको मैप करना चाहूँ विद द सेट पॉइंट or then we have a controller, then we have maybe some kind of a valve, उसके बाद आपके पास एक्सचेंजर यानी प्रोसेस है. प्रोसेस की कुछ आउटपुट है y and then we have some kind of let's say sensor और फिर ये नेगेटिव फीडबैक है. ठीक है. ये ट्रेडिशनल जो क्लासिकल मॉडल या ब्लॉक डायग्राम ऑफ फीडबैक कंट्रोल. तो राइट नाउ फॉर दिस पर्पस हमने इसको डिस्कनेक्ट कर किया हुआ है. आप देख सकते हैं कि ये जो कंट्रोलर है इट इज़ नॉट कनेक्टेड टू एनीथिंग, वरना अदरवाइज ये यहाँ से इसको कनेक्ट कर होता. तो राइट नाउ इट इज़ नॉट इन यूज. द कंट्रोलर इज़ नॉट इन यूज. अब वैल्व जो है दिस कंट्रोलर आउटपुट दिस बिकम्स लाइक मैनिपुलेटेड वेरिएबल. दिस इज ओवर MV टू दिस वैल्व. और जब हम MV को करेंगे तो इसका जो एग्जैक्ट टेम्परेचर है दिस विल बी चेंज्ड. और हम यहाँ पे स्टेप लगाएंगे स्टेप और इस स्टेप की वजह से आपके पास प्रोसेस में कुछ चेंजेस आएंगे. दिस इज़ द डाटा दैट वी रिक्वायर. ठीक है. तो अभी मैं डाटा जनरेट करूँगा और वो आपको अभी प्रोवाइड करेंगे. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ मैं फाइल सेव कर रहा हूँ और इसमें सो आई विल सेव अ फाइल फॉर टुडेज लेक्चर. ये डाटा फॉर असाइनमेंट टू
or this will be your first assignment. Okay, so this will be data 1. Save. Right. So अभी एक इसका ऑपरेटिंग पॉइंट है जो कि ये अब मैं 39 से सो माय फर्स्ट अब मेरा प्लान है कि मैं कुछ डाटा सेट्स इसके क्रिएट करूँगा, राइट। सो D1 जो D1 डाटा सेट है ये इसका इस वक्त जो प्लान का ऑपरेटिंग पॉइंट है वो है ऑपरेटिंग पॉइंट व्हेन योर कंट्रोलर आउटपुट इज CO जो है वो है तकरीबन 39% के ऊपर, ठीक है। अब मैं इसको एक टेस्ट दूंगा एंड द टेस्ट विल बी ऑफ डिफरेंट नेचर। टेस्ट इनपुट जो है लेट्स प्लान टेस्ट इनपुट विल बी 39 to 49%, ठीक है। और ये डाटा रिकॉर्ड हो रहा है, सो लेट्स मेक इट 49, एंटर, एंड इसको अब हम स्टॉप सेविंग डाटा। ओके, सो दिस इज द वन दैट वी जस्ट got here, और इसको अगर हम चाहें तो we can also have a plot. Okay. ये हमारा पहला डेटा सेट हो गया है और so this is a plot for the one जो कि ऑपरेटिंग पॉइंट था हमारा 39 step from 39 to 49%, right? Okay. Right. So now continue. अब हम 49 के ऊपर हैं. And now I will do second test. Save data. D2. Okay. Now this time ये 49 पे है. अब मैं इसको 49 से let's say 49 to 50. D2 जो है this will be the test input 49% to 59%, ठीक है, 59. So again we have this, stop saving data, और इसको हम plot कर लेते हैं. ये this will be the second one. Plot from ये है हमारे पास 49 से, ठीक है। इस तरह से आप if allowed ये आप प्लान के ऊपर इस तरह से ये टेस्ट आपने सेकंड किया, ओके। I will continue now. और अब मैं this time जो है I would like to make some larger jump, और this time जो तीसरा मैं डाटा सेट लूँगा D3, it should be around step input 59% से मैं इसको डायरेक्टली ले जाता हूँ तकरीबन 69-79% पे, ठीक है, 20%. So this will be my third save data D3. Okay, and this will be now 79. Right, and then I will plot this value D3.
इसको दोबारा हमें करना होगा, सिस्टम है सम प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हम इसको ले जाते हैं 49 एंड देन 49 के बाद 59 पे, ओके। और अब हम इसको, ओके, सो इट्स वर्किंग नाइसली, ठीक है। अब हम इसका डाटा सेव करते हैं एज अ D3, यस। नई फाइल बना लेते हैं D4, ओके, right, and then we will make 79, सेव करते हैं and then we stop plot print, or this will be D4 I think, right, D, okay। अच्छा, मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ and there is something I would like to show you right now। अब अगर इसको मैं तेजी से 29 से इसको मैं वापस 49 पे या 39 पे लेके आता हूँ, and then I will start giving it small 49, उसके बाद 59, उसके बाद 79 and then 90, and then if I try to plot this, and this is my plot for the mix steps from 39 to I think 79, okay। So अगर हम इसको देखें on desktop, assignment number 1, okay। सबसे पहले हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, जी। आप लोगों को ये बात समझ में आई जो अभी मैंने ये इसका टेस्ट लिए हैं, कोई किस स्क्रीन विजिबल है, आवाज आप आ रही है आप लोगों को, ओके। नाउ दिस इज द टेस्ट, राइट। और ये टेस्ट हमने लिया है इस सिस्टम का, right? इसको मैं राइट साइड लेफ्ट साइड पे कर देता हूँ लाइक दिस वन, और ये हमारा राइट साइड पे आ जाता है। अब आप गौर से देखिए तो हमारे पास जो हमने सेट पॉइंट है, सेट पॉइंट हम यहाँ पर इसको चेंज कर रहे थे। सो दिस इज अवर सॉर्ट ऑफ this is the MB, right? और ये आपके पास sorry, this is the MB, we have controller output, और ये जो आपके पास जो चेंज आया है वो है प्रोसेस वेरिएबल, एग्जिट टेम्परेचर का 140 पे आ गया। सो ये 140 से लेके किस तरह से चेंज हुआ है, ओके। सो आपको असाइनमेंट में मैं ये ग्राफ्स दूंगा और आपने आइडेंटिफाई करना है इसका टाइम कांस्टेंट बताना है, or calculate the 63% of this, and then this is for the second data set, third data set की भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। अब मैं ज़रा मिक्स को डिस्कस करना चाहता हूँ। इस मिक्स डाटा सेट पे अगर हम गौर से देखें, सो यहाँ पे आपको क्या नज़र आया है, इसको थोड़ा हम डिस्कस कर लें, ओके, राइट। सो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस कितना था, दीज आर द स्टेप इनपुट्स,
ठीक है, तो ये जो आपने स्टेप लिया है, ये वाला दिस स्टेप, ये कितना था? ये है तकरीबन 10% पॉजिटिव। ठीक है, ये दिस इज ऑल्सो 10% पॉजिटिव। ये आपके पास कितना है? 60 से 80, 20%, and then again from this is around how much? ये तकरीबन 79 से 89 around approximately, ये है तकरीबन 11%. So okay, close it. So what you need to do is इस जब आपने ये step test दिया तो the considerable amount will be till the steady state. यहाँ तक आप जो टेस्ट जो निकालेंगे, there will be model number 1 here, model number 1 here, and this will be, let's say, y upon u equals to k, let's say k1 upon 1 plus tau 1 s and theta and e to the power theta minus theta 1s. उसके बाद जब आपने सेकंड टेस्ट लिया है, दिस इज टेस्ट 1, टेस्ट नंबर 1, इसके बाद ये है हमारा टेस्ट नंबर 2, ऑपरेटिंग पॉइंट 2, इसको आप कह सकते हैं दिस इज द ऑपरेटिंग पॉइंट। टेस्ट नंबर 1 जो है एट ऑपरेटिंग पॉइंट नंबर 1, लेट्स से, एंड दिस इज ऑपरेटिंग पॉइंट नंबर 2। जब आपने ये टेस्ट लिया तो योर मॉडल विल बी हैविंग सम सॉर्ट ऑफ, और ये स्टडी स्टेट तक नहीं आया था, हमने ज़रा जल्दी कर दी, तो दिस डाटा इज़ नॉट गुड। बाय द वे दिस डाटा इज़ नॉट गुड। इसकी क्या रीज़न है? ये डाटा गुड क्यों नहीं कह रहा? इसको गुड क्यों, मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये गुड नहीं है? प्लीज़ एनीवन कैन टेल मी क्या वजह है कि ये डाटा जो है मुझे मुनासिब नहीं लग रहा? इसमें और पिछले डाटा सेट में क्या फ़र्क है? जी, what is the difference between these two data sets? What is the difference between first two data sets? जी बताइए, anyone? सर इनपुट के जो रिस्पॉन्सेज हैं वो ज्यादा हैं इसमें और कम टाइम में चेंज हो रहा है इनपुट। जब भी आप टेस्ट लें तो कुछ बातों का ख्याल करना ज़रूरी है। एक होता है स्टार्ट ऑफ टेस्ट। स्टार्ट ऑफ टेस्ट जब हम करेंगे तो सिस्टम वेरिएबल्स जो हैं should be at steady state, यानी बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी ना हो। ये वेरी ज़रूर कर रहे हैं जैसे यहाँ पे, लेकिन ये है कि ये एक ही ऑन एवरेज सेम चल रहे हैं। और जब आप स्टॉप करें, स्टॉप कलेक्टिंग डाटा again when all variables are settled down, are again in steady state or settled down, are at steady state. फॉर एग्जांपल पहले केस में यहाँ पे जब आपने स्टेप अप्लाई किया तो ये सिस्टम ऑलरेडी एक स्टेबल फॉर्म में था। स्टेप अप्लाई करने के बाद इट स्टार्ट्स मूविंग डाउन और उसके बाद ये जाके दोबारा से अगेन स्टेडी स्टेट में आ गया। नाउ दिस इज़ द बेस्ट टाइम, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। ये यूँ कह रहे हैं कि सिस्टम अवेलेबल फॉर अनदर स्टेप टेस्ट। ठीक है, ये खाली स्टेप नहीं, और भी सिग्नल्स होते हैं। अभी हम चूंकि स्टेप यूज़ कर रहे हैं तो इसको मैं स्टेप टेस्ट कह रहा हूँ। लेकिन राइट नाउ इस केस में जब हमने यहाँ पे अप्लाई किया है ये वाला टेस्ट, ये टेस्ट हमने अप्लाई किया, एप्लीकेशन वाज गुड, ठीक है। तो स्टार्ट
वाज ओके और इसका जो स्टॉप था वो ओके नहीं था, ठीक है। वजह ये कि अभी तक यहाँ पे आपके पास ये सेटल डाउन नहीं हुआ था, स्टिल चेंजिंग, और हमने एक नया टेस्ट अप्लाई कर दिया। ओके, सो दिस डाटा वी हैव टू डिस्कार्ड। ये जो हमारा ये वाला जो टेस्ट हुआ है जिसको मैं आपको दिखाना चाह रहा था कुछ, लेकिन वो टेस्ट हमारा मुनासिब नहीं हुआ, ठीक है। सो दिस डाटा इज नॉट गुड। इसके अंदर दो, तो ये वाला जो टेस्ट डाटा है ये सारा का सारा हम लूज हो गया। दिस इज नॉट, दिस विल नॉट ब्रिंग अस द राइट मॉडल। तो पहला जो है टेस्ट इट इज गुड एंड सेकंड टेस्ट इज आल्सो गुड, क्योंकि यहाँ पे सेटल्ड हो चुका है आपके पास। लेट मी मार्क इट अगेन with the green one. So this is good, क्योंकि इसका जो करस्पॉन्डिंग डाटा सेट है उसमें देखें तो स्टार्ट पे आपके पास स्टडी स्टेट है और एंड पे भी आपके पास स्टडी स्टेट है, ठीक है। सो वी आर एक्चुअली कैप्चरिंग दिस डायनेमिक्स गुड। इसी तरीके से ये जो आपका पहला टेस्ट हुआ था इसके अंदर भी वी आर इन अ गुड रेंज, आपके पास ये स्टडी स्टेट तक रीच करता है एंड वी हैव द डायनेमिक्स। यहाँ पे थोड़ी सी हमारे पास गड़बड़ हो गई, ठीक है। ओके, नाउ अब मैं करूँगा ये कि ये मैं आपको ये वाला जो ग्राफ्स हैं ये प्रोवाइड कर दूंगा और आप लोगों ने इससे मुझे बताना है कि आपके पास जो सिस्टम है, जो आपने इसका ये मॉडल निकाल के बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर सिंपल मॉडल, राइट। वंस वी विल हैव द मॉडल, अच्छा मैं इसके अब डायरेक्टली कुछ और चीज़ें भी आपको बता दूं। ये पूरी स्लाइड में अपलोड कर दूंगा। आई फोकस्ड ऑन दिस। अब जैसे डिस्टिलेशन कॉलम है जिसमें 50 प्लेट्स हैं, वहाँ पे भी आपके पास यू कैन ईजिली यूज़, जहाँ पे आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशंस को और इन सब चीज़ों को करना डिफ़िकल्ट हो सकता है, वहाँ आप ब्लैक बॉक्स मॉडल, इसको हम ब्लैक बॉक्स मॉडल कहते हैं, वो यूटिलाइज कर सकते हैं और दे आर गुड फॉर, वी जस्ट सॉ दैट थिंग। मैंने आपको तीन ये चार ऑपरेटिंग पॉइंट्स, डिफरेंट ऑपरेटिंग पॉइंट्स का मैं आपको एक्चुअल डाटा दूंगा, तो वहाँ से हम एक्चुअल ब्लैक बॉक्स मॉडल्स फिगर आउट करेंगे, ठीक है। दिस वाज द फोकस ऑफ आवर लेक्चर। और सो दिस इज फिगर नंबर 7.1 जिसमें जिसके अराउंड हमने सारी डिस्कशन की। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ मॉडल, सिंपलेस्ट मॉडल, जिसमें आपको के फिगर आउट करना है, आपको टॉप फिगर आउट करना है, आपको थीटा फिगर आउट करना है। ये सब पैरामीटर्स मैं आपको बता चुका हूँ अभी डिटेल से। और जब आप इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो दैट विल बी के टाइम्स एम 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी माइनस थीटा अपॉन टॉ। ये तीनों पैरामीटर्स आपको नजर आ रहे हैं। अच्छा, एम क्या चीज़ है? एम बेसिकली दिस इज द चेंज इन द इनपुट डेल्टा, क्योंकि अगर हम यहाँ गौर से देखें तो जी ऑफ एस इज बेसिकली व्हाट, डेल्टा वाई बाय डेल्टा यू। तो ये बेसिकली आपके पास m है, चेंज इन इनपुट, ठीक है। दिस इज द इनपुट चेंज मैग्नीट्यूड, ये m है, राइट। अच्छा, इसके अलावा और भी हमारे पास कुछ ग्राफिकल टेक्निक्स हैं और दोस्त ग्राफिकल टेक्निक्स और जैसे पहली वाली हमने फोकस कर रहे हैं, हम पहली वाली यूज़ कर रहे हैं। एक और टेक्निक है जिसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एक है स्मिथ गेन मेथड और एक सेमीलॉग मेथड। सो जस्ट टू क्विकली गो थ्रू इट, हम हमारे पास जो है इन्फ्लेक्शन पॉइंट में ये है कि वी एक्चुअली ड्रॉ अ टेंजेंट लाइन, और फिर टेंजेंट लाइन जब आपको टाइम एक्सिस पे ब्रेक करती है तो दैट विल बी द थीटा। और इसकी जो स्टडी स्टेट को यहाँ पे ब्रेक करती है तो दिस टाइम विल बी टेकन एज द टॉ। ये भी एक और तरीका है, थीटा और टॉ यानी है ये वही, डेट टाइम ही है, ये भी टाइम कांस्टेंट ही है, इसको निकालने का तरीका है। एंड द होल यहाँ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ये y1 से लेके y2 तक जो है टोटल ये वही आपके पास, ये सेम वही रहेगा कि m। और ये अगेन वही फिटिंग मेथड है फर्स्ट ऑर्डर प्लस डेट टाइम का एस के मेथड। इसमें हम नॉर्मलाइज स्टेप लेते हैं और इसमें हम यूज़ करते हैं दो टाइम्स t1 और t2, ठीक है। जस्ट क्विकली गोइंग थ्रू इट। और देर इज अ फॉर्मूला, थीटा कैलकुलेट करते हैं आप 1.3 टाइम्स t1 माइनस 2.9 टाइम्स t2 और
tau का formula जो given है, it is this will be given to you, don't need to remember, 0.67 T2 minus T1, और K जो है आपके पास वैसे ही स्टडी स्टेट गेन रिस्पॉन्स के तौर पर लेते हैं आप, राइट. Now directly going to the comparison. मैं comparison में ज़्यादा, अगर हम comparison देखें तो we have around 1 2 3 4 methods, और ये तीनों मेथड्स जो आपके पास हैं 1 2 3, यहाँ पे 3 डिस्प्लेड हैं. तो इन तीनों मेथड से तकरीबन आपके पास सेम ही मॉडल आता है, यानी दैट इज़ एनफ फॉर अस टू से कि हमारा जो मॉडल है दैट विल बी k अपॉन 1 प्लस tau s e to the power minus theta s. ठीक है, तो हम फोकस करेंगे द फर्स्ट वन, द इजीएस्ट वन पे. बेनिफिट इज़ कि आप न्यूरल नेटवर्क भी यूज़ कर सकते हैं सॉफ्ट सेंसर के तौर पे, बट वी विल डिस्कस इट लेटर इन डिटेल, राइट. So this ends our today's lecture, और ये असाइनमेंट मैं अभी अपलोड कर दूंगा डाटा के साथ, और आप उसमें से ये प्रोसेस मॉडल को आइडेंटिफाई कीजिएगा. ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली प्लीज लेट मी नो. तो ये मैं आप लोगों को अभी अपलोड कर दूंगा विद दी डाटा सेट. आप एक्सेल भी यूज़ कर सकते हैं फिटिंग मेथड के तौर पे, और आपने जो मॉडल आइडेंटिफाई करना है दैट मॉडल इज़, उसमें मैं लिख दूंगा द असाइनमेंट विल बी कि गिवन द प्रोसेस या plants input output data, find the first order FOPDT, first order plus that time model और the transfer function. ठीक है, ये इंडस्ट्री में सबसे पहले ये चीज़ यूज़ होती है. ओके, सो फाइंडिंग, यू विल बी एक्चुअली फाइंडिंग टॉ क्या है, उसका थीटा क्या है, और उसका के कितना है. ठीक है, एंड देन यू विल प्लग इन इनटू दिस फॉर्म के अपॉन 1 प्लस टॉ एस e to the power minus theta s. ठीक है, राइट. सो दिस एंड्स अवर लेक्चर. अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं आप लेक्चर को बंद करता हूँ. टेकिंग दिस ना, राइट, इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, ओके, अल्लाह हाफिज़.